Hello, my chemistry lover friends. I am Satya. I welcome to all of you to my channel Hidden Chemical Treasury. So, in this lecture, we are going to do some important questions based on differential rate law. So, my friends, let us start our questions. ओके सो जमीक भी मु पूर्व भिडियो किसी क्वेश्चन देइथिली आउ से क्वेश्चन गुड़ाक को आम आलोचना करवा आउ ए भिडियोर शेष में मु आउ किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन देदेवी आम डिस्कस करवा धीरे धीरे आम प्रीवियस ईयर IIT JEE आउ नीट रो क्वेश्चन सेक्शन को जीवा आउ भी डिस्कस करवा सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर एंड एंजॉय केमिस्ट्री सो माय फ्रेंड्स गोटे आमे गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन को जिते बेले डिस्कस करवा सेते बेले सभा प्रथमे हमको तीनोटी स्टेप दे आलोचना करबा पड़े। प्रथम स्टेप कौन ना गिवन दैट मीन्स क्वेश्चन ने कौन देइछि एंड सेकंड स्टेप हेउछि वी हैव टू फाइंड आउट दैट मीन्स आमको कौन बाहर करबा को हेबो एंड लास्ट स्टेप इज व्हाट डू वी नो आमे कौन जानिचे ताको अप्लाई करिवा एंड लास्ट स्टेप इज एनालिसिस मीन्स फास्ट थिंग आमे कौन क्वेश्चन देला सेकेंड रे कौन काढ़ीबार अच्छी तापरे आमे कौन जानिचे ये तीनोटी को मिसई कि एनालिसिस करिवा आउ एनालिसिस करके आमे आंसर पाई दिबा। सो आमे जेते सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आलोचना करिवा से क्वेश्चन को आमे यही तीनोटी स्टेप दे करबा को चेष्टा करिवा। सो माय फ्रेंड्स यही क्वेश्चन रे आमे अधिकांश क्वेश्चन रे रेट काढ़ीबा को जाउचे तो रेट काढ़ीबा पई मु आगुआ कही रखुची जे यूनिट सबुठु इम्पोर्टेंट फैक्टर जेते बेले आमे कोनोसी भी जगह रे किछि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करि थाउ मैथमेटिकल कैलकुलेशन समय रे यूनिट मेंशन करिवार आवश्यकता जरूरी नुहे किंतु कैलकुलेशन सरिबा परे दैट मीन्स जेते बेले आमे उत्तरटी को पाई थाउ बा कैलकुलेशन फलाफल को पाई थाउ से समय रे यूनिट निहाती भाବରେ आवश्यक आमे यूनिट को निहाती भाବରେ लिखिबा उचित। सो माय फ्रेंड्स आमे जानि नबा उचित जे रेट ऑफ रिएक्शन रो यूनिट कोन पिला माने जेमते कि भी आमे जानिथिले रेट कहा संगे समान ना रेट हेउचे चेंज इन कंसंट्रेशन दैट मीन्स मोलार कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट भितर लिखुचे दैट मीन्स मोलार कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम ओके चेंज इन मोलार कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो एई टर्म रो ही हमें आर यूनिट को कैलकुलेट करिवा बेटा मोलार कंसंट्रेशन मीन्स मोल पर volume and this term means mole per volume divided by time. So unit will be mole liter inverse that means सेठी हमें वॉल्यूम भी लगे पारे मु वॉल्यूम लगे दोछि जेत हम एपटे वॉल्यूम लिखिचे दिस इज इक्वल टू मोल वॉल्यूम इनवर्स एंड टाइम इनवर्स ओके बेटा जदि वॉल्यूम लिटर रे थिबा आमे लिटर लगे दबा टाइम मिनिट रे थिले मिनिट इनवर्स सेकंड रे थिले सेकंड इनवर्स आवर रे थिले आवर इनवर्स ओके। सो सिंपल यूनिट कोन ना मोल वॉल्यूम इनवर्स एंड टाइम इनवर्स एटा कहार यूनिट ना रिएक्शन रेट काढिवार यूनिट। सो माय फ्रेंड्स एबे हमें हम क्वेश्चन आलोचना करवा आ गोटे गोटे कर तार आंसर कैलकुलेट करवा। तो समय बचापी मु एपटे आंसर मेंशन कर सारी एबे हमको कैलकुलेशन करने पड़ोनी किंतु को प्रोसेस रे मु आंसर बाहर कली से विषय आम आलोचना करनवा ओके। तो केतरा जगह कैलकुलेशन में करवा बेटर अंडरस्टैंडिंग पे। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी 2a + 3b gives 4c that means here A is the reactant and stoichiometry is 2 and B is another reactant and its stoichiometry is 3 that gives product C
which have stoichiometric coefficient 4. Okay, so my friends, here question is that for the above reaction calculate what will be its rate. ए ऊपर रिएक्शन रेट केते हबो हमको कैलकुलेट करिवार अछि. दैट मीन्स एठी डिफरेंशियल रेट लो अप्लाई करिवा. रेट केते हबो मैं जानि छे जे रिएक्टेंट साइड पे माइनस लगेबा अदर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जहा थिबो ताको हमें 1 बाय आकार रे लिखिबा. तो 2a पे लिखिबा जे माइनस जेहेतु रिएक्टेंट डिसअपियर होउची माइनस 1 बाय 2 del a by del t. Del a by del t, that means change in concentration of a divided by change in time and stoichiometric coefficient पळे आसिला 1 by 2 2 टा 1 by 2 आकार पळे आसिला डिसअपियर होउची बोले मु माइनस साइन लगाई देली. सही टाइप रो दिस इक्वल विथ माइनस 1 by 3 del b by del t. This also equal with plus 1 by 4. Here plus sign means appearance, that means it indicates the product side. Plus 1 by 4 del c by del t. Okay, so जो माने कर तथा भी डाउट रही जाउची जे एटी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 बाय आकार रे काहे के आसुची आ डेल a बाय डेल t रे अर्थ कोन डेल b बाय डेल t रे अर्थ कोन. तो से मानो को मु रेफर करूची से से मानो मोर प्रीवियस वीडियो गुडा को दया करी देखि नंतु आ सेठारे बहुत भलो भाबरे एक्सप्लेन करा जाईची आ पछरा रीजन कोन. ओके माय फ्रेंड्स, मु भाबुचे जे समस्त बुझी पारिथिबो. Write the next question. Write the rate of reaction and reaction mention kala 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. So here ए दीटा क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न अछि. खाली डिफरेंस कोन ना ए जगह में ए बी आकार रे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखै छै ए बी सी आकार रे, किंतु ए जगह आम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को से मानको प्रॉपर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा देखे छे. दैट मीन्स एबे ए ऊपर जो प्रकार टेक्निक अप्लाई करथिले एठी भी से टेक्निक अप्लाई हेबो. रिएक्टेंट पई नेगेटिव साइन देबी और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 बाय आकार रे आनी भिरी एंड एठी जो रहिला तार रिप्रेजेंटेशन कार रिएक्टेंट रिप्रेजेंटेशन ताको मु आनी भिरी डेल NH3 by del t and like this एपट आसीबो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अछि 5 आसीला -1 by 5 del O2 by del t. For this plus 1 by 4 del NO by del t and plus 1 by 6 stoichiometric coefficient 6, so plus 1 by 6 del S2O by del t. Okay my friends, this is very simple if you have understand my previous lecture. So my friends, here मु पूर्व वीडियो रे गोटे क्वेश्चन चार्ट देइथिले. से क्वेश्चन चार्ट रे एई क्वेश्चन टा 4 नंबर रे थिला. से जगह 3 नंबर जो क्वेश्चन टा थिला क्वेश्चन टा बहुत बड़ो थिला तो ए जगह मोर लेखिबा पे स्पेस कम थिला. एठी मो सेथि पे आगो 4 नंबर क्वेश्चन टा करि देइछि. 4 नंबर क्वेश्चन टा थिला जे 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 if rate of appearance of NO2 is 2 mole liter inverse. Second inverse, find first question ROR, that is rate of reaction, and second question rate of disappearance of nitrogen pentoxide, that means N2O5. So my friends, एठी आमे सभा प्रथमे तार डिफरेंशियल रेट लॉ को लिखि नबा जहा कि हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे परिबो. ओके माय फ्रेंड्स, सो डिफरेंशियल रेट लॉ को होचे जे रेट इक्वल टू दिस इज रिएक्टेंट, सो -1 by 2 del N2O5 divided by del T. This equal to plus 1 by 4 del NO2 that by del T. This equal with plus del O2 by del T. So my friends,
क्वेश्चन में डाटा दे देछि जे रेट ऑफ अपीयरेंस लिसन केयरफुली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 रो मीनिंग होछि कोन ना अपीयरेंस पई पॉजिटिव साइन रेट ऑफ अपीयरेंस दैट मींस del NO2 by del T तो आर मीनिंग ता कोन ना बेटा तो मु कहि सारी अपीयरेंस में पॉजिटिव साइन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आमने दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज del NO2 by del T so it is has value 2 mole liter inverse second inverse so my dear friends here we have this value this is the given data okay so हमको पचारिछि जे रेट ऑफ रिएक्शन कौन रेट ऑफ रिएक्शन कौन ओके तो आमे आम पूर्व ज्ञान अनुसार डिफरेंशियल रेट लो को अप्लाई करिकी आमे एई तक लाइन लिखि दे परिबा आमे बेटर जानिछे ओके सो रेट ऑफ रिएक्शन जदि कैलकुलेट करिबा एइठो आमे जानि परजो जे रेट ता कहा संगे इक्वल दिस साइड NO2 इज हियर रेट कहा संगे इक्वल प्लस 1/4 del NO2 by del T that means रेट कहा संगे इक्वल 1/4 del NO2 by del T so my dear friends as we know that the value of del NO2 by del T is 2 okay so this is not important to mention unit here because we are calculating now so I will get answer that 0.5 or 1/2 that this is 0.5 mole liter inverse second inverse okay so this is the rate of reaction जोटा कि हमर एपटे आंसर बाहरी सारिछि this is the rate of reaction my dear friends एबे हम कैलकुलेट करिबा rate of disappearance of N2O5 that is nitrogen pentoxide आर वैल्यू केते बेटा आगो क्वेश्चन से कोन पचारे छ ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस मींस फर्स्ट नेगेटिव साइन दे दो रेट ऑफ डिसअपियरेंस कहार ना N2O5 रो दैट मींस del N2O5 divided by del T से हमको पचारे छ del N2O5 divided by del T तो ए डिफरेंशियल रेट लो रे हमें जानि छे जे -1/2 del N2O5 by del T is equal to plus 1/4 del NO2 by del T so डाटा टाको मु एठारे लेखि नउची ए गोटा को हमें कैलकुलेट करिवार अछि ए गोटा कर मूल्य कैलकुलेट करिवार अछि एठो हमें जो डाटा पाइले डाटा हेउची -1/2 del N2O5 divided by del T equal to 1/4 del NO2 by del T so my friends मोर एई तकर ही वैल्यू दरकार तो गोटे पट साइड आको रखिकी with minus sign okay minus sign indicates that disappearance so 1/2 को आर पट को नै गले मते मिलिबो minus del N2O5 divided by del T this will equal with 2/4 and as we know that the value of del NO2 by del T is 2 okay so I have after calculation I have answer is 1 here so and I have to write unit now the unit will be mole liter inverse second inverse so my dear friends here we have answer 1 mole rate of disappearance of nitrogen pentoxide is 1 mole liter inverse second inverse so my dear friends एबे हमें कैलकुलेट करिबा आउ किछि क्वेश्चन विषय रे here we have question that during the formation of ammonia 2 moles of
N2 disappears in 1 minute. Find rate of reaction and rate of disappearance of hydrogen gas with rate of appearance of ammonia. So here it is mentioned that volume is equal to 1 liter. Okay, so my friends आमे एबार आंसर करिबा सभा प्रथमे देखिबा जे हमको कोन डाटा देछि आम पाखरे डाटा मेंशन अछि जे during the formation of ammonia 2 moles of N2 disappears in 1 minute. Okay, so that means N2 रो concentration change होछि केते ना 2 moles. Okay, concentration change होछि 2 moles केते समय रे ना 1 मिनिट रे. सो ए जगह रे N2 रो जो concentration चेंज हैला ओके हां केते मोल चेंज हैला ना 2 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम केते ना वॉल्यूम 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1. सो हियर मोलर concentration हो इज इक्वल टू 2. बुझी होछि त बेटा. लिसन ए जगह रे जति मेंशन था वॉल्यूम 2 लीटर जति मेंशन था सपोज वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 2 लीटर सपोज जति मेंशन था ताहले हमें कोन करि थांते ना ए जगह रे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 2 करि थांते आंसर आस्तांता 1. दैट इज मोलर कंसंट्रेशन हमको 1 मिली थांता किंतु जेतो वॉल्यूम हम पाखरे 1 लीटर अछि और नंबर ऑफ मोल्स अछि 2 लीटर. ओके सो number of moles अछि 2 moles and volume 1 liter. Number of moles divided by volume we have answer 2. Okay, this is the molar concentration right now. Okay, so question ने कहला जे that means 2 molar concentration नाइट्रोजन डिसअपियर कला केते समय रे ना 1 मिनिट रे. बेटा डिसअपियर कला माने नेगेटिव साइन. ओके केते सम हां डेल के डिसअपियर कोच नाइट्रोजन डिसअपियर कोच राइट हां नाइट्रोजन. ओके डेल N2 बाय डेल T दिस इक्वल विथ व्हाट चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन केते 2 डिवाइडेड बाय टाइम 1 मिनिट. दिस इज 2 by 1 that is simple 1 mole liter inverse. Okay, 1 mole liter inverse minute inverse हमें आपको मिनिट कर 1 मिनिट अच्छी. सो 2 mole liter inverse minute inverse this value. Okay, value of माने माइनस डेल N2 by डेल T equal to 2 mole liter inverse minute inverse. so my friends एथर आमे गिवन डाटा पाई गले. ओके सो तापरे आमर आइडिया कौन आ कौन कौन पचारि एठी आमे जानि परछे जे आमको पचारिछि रेट इक्वल टू व्हाट तापर पचारिछि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S2. दैट मींस डिसअपियर करबो नेगेटिव साइन डेल S2 बाय डेल T इक्वल टू व्हाट. ओके आउ हमको कौन पचारला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया अपीयरेंस दैट मींस पॉजिटिव साइन डेल NH3 बाय डेल T इक्वल टू व्हाट. हमें ए तीनोटर वैल्यू कैलकुलेट करिया को जाउछ. ओके सो वन इज रेट इज इक्वल टू व्हाट rate of reaction and another minus del S2 by del T equal to what and then plus del NH3 by del T equal to what. so आमे आर आंसर काढिबा तो आंसर हाँ दैट मीन्स आमे कौन काढिबा को जानि सारलेनी आ कौन डाटा देछि जानि सारलेनी आमे आमे हमर आइडिया रु जानि छे जे डिफरेंशियल रेट लो को होचे रेट equal to what here is stoichiometric coefficient that is 1 so 1 by 1 is 1 minus del N2 divided by del T. This also equal with del minus 1 by 3 del H2 divided by del T. This equal with what for ammonia we have to give plus sign plus 1 by 2 del NH3 by del T. Okay, del NH3 by del T. so आमे एथरो कैलकुलेट करिवे
rate of reaction equal to from this equation we know rate equal to minus del N2 by del T, and we know minus del N2 by del T equal to 2 mole liter inverse minute inverse. Okay, rate of reaction equal to minus del N2 by del T equal to 2 mole liter inverse minute inverse. So rate of reaction हमको मिलेगा. Then काढ़िबा rate of disappearance of H2. Okay, rate of disappearance of H2 तामाने कोना ना minus del H2 by del T equal to what हमें काढ़िबा. Okay, so del H2 by del T from this equation differential rate law we know that okay, from these two things we know minus del N2 by del T equal to minus 1 by 3 del H2 by del T. Okay, friends, so here we have आमे एई तकर वैल्यू काढिबार अछि तो 3 टाइप टू कानी बाहरी हमको मिलिबो माइनस del H2 by del T. 3 टाइप टू कसले मल्टीप्लाई हबो 3 into del minus n is here 3 into del N2 divided by del T. So we have answer 3 and this value is 2. This equal to 3 into 2. This equal to 6 mole liter inverse minute inverse. Okay, 3 mole liter inverse minute inverse. Then we have to calculate rate of appearance of ammonia. Okay, rate of appearance of ammonia. That means we have to calculate plus del NS3 by del T equal to what? We are going to calculate this value. So as we have discussed from differential rate law, we have here, I am using a separate ink for this. This is our differential rate law. Okay. So from differential rate law we know that del NS3 by del T is equal with minus del N2 by del T. Okay, so here 1 by 2 is here plus 1 by 2 del NS3 by del T is equal with minus del N2 by del T. Okay, so I am writing this again here plus 1 by 2 del NS3 by del T equal to what? This is equal with this, that is minus del N2 divided by del T. Okay, my friends, so from this data we can calculate del T. This equal to 2 separate multiply haba, multiply hela हमको मिला 2 into minus del N2 by del T. Friends, यार value टा होचे 2 into 2 we have 4 mole liter inverse minute inverse. Answer होचे 4 mole liter inverse minute inverse. So friends, एबे हमें next question को face करिबा. Next question, that means 5 number question रे कहिछि जे for a reaction 2A plus B gives product 3C. The rate of appearance of C at a time T is 1.2 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse second inverse. Find the rate of reaction. That means हमको कहि रखिछि जे rate of appearance of C that means plus del C by del T. Rate of appearance of del C by del T. This is equal with what? At a time T 1.2 into 10 to the power minus 4. Unit is here mole liter inverse second inverse. Okay, mole liter inverse second inverse. So then we have to calculate the
find the rate of reaction. Okay, so from this data we can calculate differential rate law. Differential rate law tells us that rate equal to -1/2. बेटा आमे देखो आमे आउ ए आउ बी रेस्पेक्ट टू देखिए टाइम वेस्ट करवानी डायरेक्ट आम सी रेस्पेक्ट टू देखा +1/3 del c by del t. ओके सो आम जानते del c by del t वैल्यू है 1.2 into 10 to the power -4 मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ओके सो आम 1/3 into 1.2 into 10 to the power -4 we have answer here 12. We have answer here 0.4 into 10 to the power -4 mole liter inverse second inverse. Okay friends, बेटा ये कन्फ्यूज हबार कथा कौन ना कन्फ्यूज हबार कथा है क्वेश्चन ने देछि जे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी. बेटा मन रखि थिबो जे हम जते रेट लॉ लिखो आम ए पर्टिकुलर ए इक्वेशन पे जदि मु रेट लॉ लिखिबी रेट इक्वल टू प्रोडक्ट एंगल लो जदि मु देखिबी रेट इक्वल टू +1/3 del c by del t. ठीक हाँ बेटा ये टोटल वैल्यूटा होची रेट सी किंतु कहिची जे केवल रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दैट मीन्स केवल del c by del t रो कथा ही कहूची ए टोटल कथाटा कहू नाही. सरला कथा हाँ तो बहुत इंपोर्टेंट कथा माइंड रख बोल से तो del c by del t रो मीनिंग होची कौन ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ लिखि दउची रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी किंतु ए जगह जदि मो +1/3 del c by del t को दर्शाइबी आर अर्थ हो रेट ऑफ रिएक्शन. ओके आर अर्थ हो रेट ऑफ रिएक्शन सेटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर जोटा कि बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर दरकार ए बाबद रे. ओके सो ता पर क्वेश्चन डिटो 5 नंबर पर निजे ट्राई कर आराम से हो. ओके बहुत इजी है 5 नंबर जहाँ 6 नंबरटा से. ओके सो माय फ्रेंड्स टुडे सेक्शन आम बहुत किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना कले क्लास सरला पर मु वीडियो लास्ट मु किसी क्वेश्चन भी देदेवी आपण मानक आउ माय फ्रेंड्स निज निजर फीडबैक देवे. तो आज क्लास केमती लगे को क्वेश्चन बुझी है कि हेलानी आउ जदि को क्वेश्चन बुझी पारिलनी बोली कमेंट आसे तो मु ट्राई करी जे आपण मानकर से क्वेश्चन बा डाउट को बुझेबा पई ट्राई करी. सो माय फ्रेंड्स आज पई विदाय टाटा बाय बाय. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो and thanks for your kind presence. Have a great day. Okay, thank you.